So, good evening, friends. Today, the topic is non-parametric test. And after learning the basic parametric test, now today, let's discuss the non-parametric test. So, first of all, just one revise the difference between parametric and non-parametric one more time. In parametric, the word parameter is basically used for the population. So parameter is means population. So if the conclusions are applicable to population, so then this study is parametric. So parametric study is that parametric test is that test where conclusion can be applicable to the population, and it is possible only when distribution is normal, homogeneity of variance is required, random sampling is preferred, at least one variable should be scale variable, and sample size is large. So these are the conditions for parametric test. Non-parametric test, sample the conclusions limited to the sample. There is no condition of the distribution. Homogeneity of variance is not required. No sampling method. Data is only ordinal and nominal, and or sample size is very small, especially less than 30. So this condition is popularly used for non-parametric tests when sample size is less than 30 or very small, or it is not normally distributed. And the five popular non-parametric tests are chi-square test, Mann-Whitney test, Wilcoxon test, Kruskal-Wallis test, and Friedman ANOVA test. So these are the most popular non-parametric tests. So chi-square we already covered. So today we cover Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, and Friedman ANOVA. So we have completed till these parametric tests, sample t-test, ANOVA test, correlation test. So these are the parametric tests. Regression is also parametric, and these are the non-parametric. Now, why it is non-parametric? In non-parametric test, almost every non-parametric test, the concept of rank is very important. So in all non-parametric tests, whether any test, the data is converted into ranks. Analysis is done on ranks and the result are reported. So what is the meaning of rank? Now suppose this is the score of a person. 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16. We arrange these scores in ascending order. So the smaller number is provided rank 1 and another number is rank 2, but because both are having same rank, same score, so rank should be same. जब इन दोनों लोगों के 13 नंबर हैं तो इनकी रैंक भी सेम होनी चाहिए. सो 1 + 2 / 2 is 1.5. मतलब एक 1 + 2 = 3, 3 / 2 1.5, 1.5. So we provided the 1.5 rank to the person. Similarly, the third person is provided rank 3 and 15, 15, 15. 3 people are having equal numbers. So we have to provide same rank. So they are having 4, 5, 6. Because up to 3 we have already assigned. So these are 4th, 5th, and 6th. The average is 5. So we assign 5, 5, 5. Similarly, 16, 16, 16, 16 means 8.5, 8.5, 8.5, 8.5. So the concept of rank is very important here. So if you understand the concept of rank, then all the
4 tests are very easy. Okay. So first of all, I will solve the Mann-Whitney test with the rank example. Then I will come to the software. Okay. So t-test, basically independent sample t-test. In independent sample t-test, we compare whether the two groups are having the equal mean or not. So t-test is applicable when the data is large, normally distributed, homogeneity of variance is there. But Mann-Whitney test is similar to t-test, independent sample t-test, but it is applicable when the number of sample size is very low. So Mann-Whitney is the substitute of independent sample t-test. Okay. Now first let's do the example of Mann-Whitney test. So this is Mann-Whitney test. So first of all, I'm showing you the calculation part, and then I will show you the SPSS part. Okay. So I just delete it. So in this case, the the groups, there are two groups. These are independent groups. So yellow is group number 1. So yellow represent group number 1, and the green is representing the group number 2. And because these are independent groups, so we can apply independent sample t-test, but because the data is very small, so we apply Mann-Whitney test. Now the concept is that, first of all, we have to calculate the rank and rank. We have to calculate the rank for this group 1, then group 2. Okay. Even you can ignore this part. So let's solve the rank. So this is before the experiment, and this is the after the experiment. So pre and post. So there are two groups. We are measuring them before experiment and after the experiment. Okay. So now this portion, first of all, we have to find out the lowest number. So lowest number you can see is 13. So we assign the number rank 1 or let's do one thing. Let's sort it. Okay. Now giving rank is slightly easy. So 13 and 13 is 1.5 and 1.5 because there are two people who are having 13. So we assign the rank 1.5, 1.5. Then 1, 2, 3. So 3 is provided, rank 3 is provided to the 14 because this is 1, 2, 3. Now 4, 5, 6. 3 people are sharing the same rank. So they are sharing the position 4, 5, 6. So 5, 5, 5. Then 16, 16, 16, 16. It means they are sharing the position 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So basically these 4 people are sharing the position 7, 8, 9, 10. So if you take the average of that, it is 7, 8, 9, 10. 8.5, 8.5, 8.5, 8.5. Okay, now they shared the rank 7, 8, 9, 10. This is 11th and 12, 13, 14.
So it means 13, 13, and 13 because we have to provide same rank to them. It is basically 12, 13, 14. 15 and 16 are same. So it is 15, 15.5, 15.5, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 17 and 18. So it means 17.5, 17.5, and it is 19 and this 20. So we convert the number into the rank. So this is the first rule of all the non-parametric tests. Now let's arrange them in the sequence. So now I'm arranging them in the sequence. Okay. So this is the rank. Now we have to calculate the average rank of the groups. This is called average rank. Now the average rank of this group is average of the ranks 11.95. Similarly, I will calculate the average of the rank. Yeah. So 9.05. Now these two numbers are compared by a formula that I'm showing you in SPSS. Let me show you the SPSS file. So in independent sample t-test, we are having two variables. One is the scale variable and second is the group variable. So similarly, we are doing here. Okay. So we are having the score and it is called group. Now the data is that the score is this. This is the score and this is first group and this is second group. Okay. Now, if I apply independent sample t-test, suppose the method is compare means independent sample t-test. We are comparing the score by group. There are two group, 1 and 2, and click OK. So you can see that uh, although the mean of first group is 19.6, the mean of second group is 16.4, and p-value is representing there is no difference. The p-value is representing there is no difference. But because the sample size is very low, so we cannot apply this test. So we have to apply the non-parametric test. So that's why I'm showing you the non-parametric test which I am going to apply now is the substitute of independent sample p-test. So analyze, you have to go to non-parametric test, legacy dialog, and we are running two independent samples. So two independent samples we are going to apply. Now the test variable is the score and grouping variable is the group, and we assign 1 and 2, right? So everything is similar to t-test and we are applying Mann-Whitney test. Okay. So you can see that the first group is having 10 people. Second group is having 10 people. The mean rank that we calculated in the graph 11.95, 9.0.25, 11.95, 9.05. So the question is that are these equal or not? ये जो मीन रैंक आपको दिए हुए हैं ये इक्वल है या नहीं? तो p value is p value, this is the p value. It is one tail, two tail, 269, 269. Because the p value was more than 0.05, so null hypothesis cannot be rejected. It means there is no difference
in the groups, right? So I hope it is clear. So let me show you that you have to report this, and you have to report p-value, Mann-Whitney, like this. P-value is more than 0.05. So null hypothesis cannot be rejected. So therefore, we accept that there is no difference between the two groups. Now, same example, if I apply in post mean. So if I go back to the, yeah. So same process I am going to do with post. Okay. No. So as usual, we have to convert the whole table in ascending order to provide the rank. Let me check. Okay. Yeah, it is working. So now rank is 1, 2, 3, 3 means 3.5, 3.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 35 is shared by 3 people. So they are sharing 16th, 17th, 18th position. 16, 17. So 17 is the average. 17, 17, 17, then 19, then 20. So we converted the number into the rank. And now let's arrange them in ascending order according to the number sequence. Okay. Now we calculate the mean rank. So the mean rank is equal to average of the ranks. And here we calculate the average of the ranks. Now you can see that the average of the rank is now different. 15.1, it means the average score of this group increases sharply and average score of this group decreases, right? So it means the difference may be there in the post examination. So if you just copy this and paste in SPSS, this is for post score. And if I want to check whether the post score is different for different groups or not, again go to analyze the legacy dialogues, two independent samples. Now I want to compare post score. And now you can see that the score is 15.10 for the group number 1, 5.9 for the group number 2, and the difference is found to be significant. You can see here. So we can say the average score of group number 1 increases sharply because of the experiment. So group 1, the treatment that is provided to the group number 1 is better. So this is called Mann-Whitney test. I hope it is clear. And for just confirmation, I am doing t-test and how to then I apply the Mann-Whitney test. So in day number 3, I think we applied t-test. No. In day number 4, we apply t-test. Let's say independent sample t-test. So performance or job retention, let's say job retention and gender. So we can apply the t-test between the two. So this is the t-test. I want to see the retention on the gender. Gender is provided 1 and 2.
and t-test. So the t-test is showing the significant difference in the groups, significant difference. And you can see that the average of female is higher. The average of female is higher, and it is significantly higher because t-test is more than 0.05. So if I apply Mann-Whitney, what kind of result is there? So just to check, female, high mean, significant difference. So if the same test I apply in non-parametric test, so I go to the two independent sample t-test. This variable come here, gender come here. Gender is assigned by 1 and 2. Continue and okay. So you can see that the p-value is also found significant here, 0.03, and the mean rank of female is higher. So the interpretation wise, there is no difference between the Mann-Whitney test and the uh, t-test, but the way we are conducting the test is different. So here we are comparing the mean rank. In t-test, we are comparing the score. So we can say the average score of female is high, and because p-value is less than 0.05, so we can say it is significantly high. So this is Mann-Whitney test. So I hope you understand the Mann-Whitney test. Okay. So one more example. So we have independent sample. Okay, this is also example of independent sample t-test. So we are having adversary quotient, and we are having two group of people, service class, business class, and we want to see where the adversary intelligence is high. So we apply compare means, independent sample t-test, adversity quotient, profession is 1 and 2, continue. Okay. So the mean of business class is high, 63, and it is significantly higher. You can see it is significantly higher. So there is a significant difference, and the intelligence of business class is higher. This is the conclusion. Now we compare with Mann-Whitney test. So in Mann-Whitney test, the variable comes here, profession comes here. The value I'm assigning is 1 and 2. Continue and okay. So you can see that the p-value is also found to be significant, and the business class mean is high. The business class mean is high. You can see that the business class mean is high. So conceptually, we are getting the same result in independent sample t-test as well as Mann-Whitney test. So I hope the Mann-Whitney test is clear. In independent sample t-test, we are comparing the average. Here we are comparing the mean rank, and higher the mean rank, higher the mean, higher the average of that group. So I hope it is clear. Now I'm explaining you the Wilcoxon test. So Wilcoxon test is the substitute of paired sample t-test. So like Mann-Whitney test is the substitute of independent sample t-test. Similarly, the Wilcoxon test is the substitute of paired sample t-test. Paired sample t-test. So how to run it? Let me show you that. First of all, I will show you the paired sample t-test. Then I will show you how to apply Wilcoxon test. So let's say this example. In this case, we are having life quality before joining the self-help group, and life quality after joining the self-help group. So there are two groups. One is called pre-group and second is called after group. Now, if we apply paired sample t-test, then let's see the results. Analyze, compare means,
paired sample t-test, and we are comparing this pair. Okay. Now, if you see the result, the average mean of the after joining is high. So it is 60. The life quality after joining the self-help group is 60. The life quality before joining is 43. And the difference is found to be significant. You can see that the significance is found significant. The p-value is found significant. So the conclusion is that there exists significant improvement in the quality of life after joining the self-help group. Now, what happens if I do the same example in Wilcoxon test? So go to analyze, because it is Wilcoxon test is the substitute of uh, paired sample t-test. So we can also apply. Okay. Now, two related sample. Two related sample means the sample is same. Why related? Because the sample is same. So because the sample is same, so we can apply this related sample example. Now, the method is exactly same. You know that we select pre and post, take here, click on Wilcoxon, and okay. Okay, so now you can see that the rank will come here. So Z is coming minus 3.9, and significance is equal to 0.000. So basically, if you see life quality after joining the self-help group minus life quality before joining the self-help group, so test is a statistic and it is found to be significant. It is found to be significant, right? So we can conclude that there is a significant increase in the, because minus here means pre minus post. So we have to interpret like this: pre minus post. If pre minus post is negative, it means there increase significant mean after the event. So in this case, you can apply like this. Okay, let me show you some more example. I have a special folder for Wilcoxon test. Okay, again example. Suppose there are two feedback for faculty A and feedback for faculty with B, and you can assume that they are giving the interviews, and the feedback is coming from the experts. So we want to know that whether the feedback of faculty A is similar to the feedback for faculty B or not. So it is a case of repeated sample t-test. So we apply paired sample t-test, and okay. So you can see that the feedback of faculty 2 is high and it is found to be significant. It means faculty 2 is significantly better than faculty 1. So how we can run this test on Wilcoxon test? So go to analyze and non-parametric test and two related sample. So you select both here, Wilcoxon, and okay. It is minus and significant. It means first minus 2 is minus. It means second faculty is better than first one, and it is found to be significant. It is found to be significant. So in this way, the Wilcoxon test is just similar to the paired sample t-test. So I hope you understand the Mann-Whitney and Wilcoxon test. These are the inferior substitutes or non-parametric substitutes of independent sample t-test and paired sample t-test respectively. So this is very easy test. Now I'm showing you the substitute of ANOVA.
So first of all, I show you the concept. In ANOVA, suppose we are having uh, independent groups. Independent groups means one is for young people, middle-aged people, old people. So these are independent groups. So when you want to compare the mean of independent groups, which are more than two, because in ANOVA test is applicable only when the number of groups are more than two. So similarly, when you are having number of groups more than two, but sample size is small and the data is not normally distributed, then you can apply Kruskal-Wallis test. So Kruskal-Wallis test is the substitute of independent sample ANOVA test. Similarly, we are having the the last test. It is the repeated sample test. Like suppose you are having one group and there are 20 people in that group. So you are taking three responses: response number one, response number two, response number three. All the three responses are coming from the same group. Then it is not a independent sample case, it is not a repeated case. So independent sample वो होता है जहां पर आप अलग अलग ग्रुप से आप डेटा लेते हो. तो इंडिपेंडेंट सैंपल हो गया जैसे यंग, मिडिल एंड ओल्ड, मैरिड, अनमैरिड एंड डाइवोर्स, लाइक दैट. लेकिन अगर आप एक ही ग्रुप से डेटा लेते हो, आप दो डेटा ले सकते हो, तीन डेटा ले सकते हो. दो डेटा लोगे तो विल्कॉक्सन टेस्ट, तीन डेटा लोगे तो यहाँ पर चौथा टेस्ट लगता है जिसको हम कहते हैं फ्राइडमैन अनोवा टेस्ट. सो क्रिस्टल-वॉलिस टेस्ट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ अनोवा टेस्ट, independent sample, and Friedman ANOVA test is the substitute of repeated ANOVA case. Repeated ANOVA case. So these two differences are there. Now I am showing you the ANOVA, and then I will show you how to apply Kruskal-Wallis in place of ANOVA. So let's go to the ANOVA first. Yeah. Okay. So I'm just showing you example. So we are having three cities: city 1, city 2, city 3, and we are comparing the air pollution. So analyze one-way ANOVA, air pollution, three cities, and you just apply simple test. Okay, so you can see that the p value is 0.057. It means no significant difference. लेकिन हम difference ले आते हैं. So for example, city number one में थोड़ा अगर मैं pollution बढ़ा देता हूँ. So just make the difference. Now, if I apply the one-way ANOVA, so you can see the difference is not much. Okay, कुछ बड़ा नहीं. So let me do the reverse. Okay, let's try one more time. If we apply one-way ANOVA, I hope the difference is found to be significant. Yeah. So we can say the difference is found to be significant. And I want to compare the mean. So we can go for options: descriptive, homogeneous test. And the response is showing that the mean is highest in case of city number 3, Ghaziabad. So Ghaziabad, high mean; Delhi, lowest mean. And the assumption is partly fulfilled. The difference is found to be significant. So what happened if you apply Kruskal-Wallis test? Let's compare the result. So go to analyze.
non-parametric test, legacy. Now we are going to K independent samples because we are comparing the mean of independent samples. Air pollution, area, range is 1, 2, 3 because we are having three cities. So we are applying Kruskal Wallis test. So you can check Kruskal Wallis test. Click OK. So the p-value is found to be significant, and the average mean of Ghaziabad is the highest, and average mean rank. Here we are comparing the rank, mean rank. So all non-parametric tests, we are comparing the rank. So average rank of Ghaziabad is highest and Delhi is the lowest. So we can conclude that there exists significant difference between the average pollution of the cities. So in this way, we can compare the different independent groups by non-parametric test, Kruskal Wallis test. So one more example, let's see. Okay, suppose we are having the data of happiness, and this is happiness score, and I want to compare happiness between the income. So let's apply one-way ANOVA happiness to the income group, and in options I go for descriptive, homogeneity test, and okay. So assumption is fulfilled. So you can see that there is a significant difference. There is a significant difference as per the income. And highest mean I can find out more than 25 lakhs. The average mean is 4.5. So average mean is more than 25 lakh. Second highest mean is 10 lakh and the lowest is 10 to 25. So now what happens if we apply non-parametric test here? So go to non-parametric test, legacy dialog, K independent samples, and happiness we sent here. Grouping variable is income. Range is 1, 2, 3, and apply Kruskal Wallis. Okay. So the highest mean rank is found to be 352 for the income group more than 25 lakhs, and second highest is less than 10 lakhs, 337, and the lowest is found in case of 10 to 25. So exactly same result we are getting here. And it is also found to be significant. P value is also found to be significant. So conclusion wise, there is no difference between the Kruskal Wallis test and the one-way ANOVA test. So I hope you understand that. Now my last test is Friedman ANOVA. So Friedman ANOVA is applicable when you are collecting multiple data from the same group. So it is called repeated ANOVA. So like I'm showing you the example. Okay. So there are three, let's say there are 15 students in a class. So the teacher one taught with the help of Blackboard, teacher two taught with the help of PPT, and teacher three taught with the help of case study. So you know that different teachers taught using the different methods. So three teachers taught with different methods. Now I want to check whether whether the student learning is different for different cases or not. So all these score which you are looking here, so they are the learning score, and we want to check where the learning score is high and where the learning score is low. So that we want to compare here. Okay. Now go to analyze. Go to non-parametric test, legacy dialog. So K related sample. So K means more than 2. So when you are having 2, then it is showing as 2.
When you are having more than 2, then it is showing as K. So because we are applying ANOVA on a repeated sample test, so we have to apply K related sample. And all the related samples and here. So we are applying Friedman ANOVA. Okay. So you can see that the highest learning comes from the case study, lowest learning comes from the PPT, and second highest learning is coming from Blackboard. So, and the p-value is found to be significant. So we can say there exists significant difference in all the different method of teaching. Case study is found to be have the highest mean rank, and PPT is having the lowest mean rank. So in this way we can compare the different repeated groups using the Friedman ANOVA test. So let's do with one more example. So we have, let's say, treatment program. Okay. So it is like, so when you join a hospital, the hospital starts your treatment. On the first month, the values of the disease is this. मतलब जब आपने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, 10 लोगों ने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, तब उनका स्कोर इतना था। और 1 महीने बाद जब उनका मेजरमेंट किया गया तो स्कोर इतना था। और 2 महीने के बाद उनका स्कोर इतना था। मतलब लेकिन जिन लोगों पे ट्रीटमेंट हो रहा है वो तो सेम ही है। तो उन्होंने ही शुरू किया और उन्होंने पे ही खत्म किया। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या महीने हर महीने उनके अंदर डिफरेंस आया, क्या शुरू में 1 महीने बाद 2 महीने बाद उनके अंदर कुछ डिफरेंस था। तो दैट वी वांट टू चेक। सो इसको वेरिएबल मैंने क्या दिया, वेट। वेट मान लीजिएगा कि वेट एट स्टार्ट इन केजी, weight after 1 month, and weight after 2 months. So we want to compare whether they are reducing the weight or not. So go to analyze, non-parametric test, legacy dialog, care related sample, and we have to take all the variables here and click on Friedman ANOVA and just click OK. So in the start, the weight was 2.9. After 1 month, 2. After 2 months, 2. इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. So p value is more than 0.05. So we can say that there is no significant reduction in the weight for the people. So that's why there is no significant difference found. Like let's say अगर मैं difference कम कर देता हूँ, मान लीजिए, तो कैसे दिखेगा रिजल्ट? सपोज ये 65 वाले का वेट 50 हो गया, एंड 62 वाले का वेट हो गया 56, 65 वाले का 57, जिसका 107 था उसका वेट हो गया 85। ओके, आई एम जस्ट शोइंग हाउ दी सिग्निफिकेंस विल कम। तो इसको 99 मान लेते हैं। सो दिस इज 59, it is 65 and it is 58। ओके, सो सपोज इनका वेट अगर सिग्निफिकेंटली कम होता तो रिजल्ट कैसा दिखता? तो एक बार एनालाइज, नॉन पैरामेट्रिक, legacy dialog, care related sample, everything is same, just okay. Now you can see that कि पहले 1 महीने बाद तो वेट बढ़ा। So weight after 2 months is increasing from 2.4, 2.6 is more than 2.4, but after 2 months it reduces and the reduction is significant. So in this way we can say there is a significant difference in the weight in the months.
So this is called Friedman ANOVA test. So I hope all the four tests are easy to learn, easy to apply. So there is not much to discuss in non-parametric test, and I hope all the non-parametric tests are clear. So we have discussed, just one more time, we have discussed the non-parametric test and parametric, non-parametric, rank. Mann-Whitney is the substitute of independent sample t-test. Wilcoxon is the substitute of paired sample t-test. Kruskal Wallis is the substitute of independent sample ANOVA test. And Friedman ANOVA is the substitute of repeated sample ANOVA test. So this is the non-parametric test which you want to learn. So like this. So Friedman ANOVA is the same group but comparing multiple times. Okay, so if you have any query, you can ask. And the Friedman ANOVA is easy test. Okay, so that's it from my side for about non-parametric test. Now give me a minute. Okay, so Rajesh, you can mute yourself and ask. Yes, sir. Unmute. Sorry, sir. Sorry, sir. Sir, will there be a test? Will there be a paper exclusively only with Mann-Whitney or Kruskal Wallis? It will not be like that, no, sir? So these tests are only applicable in medical science where the sample size is very small. Okay, sir. So in management, you may not see these tests because the sample size is the limitation. So in case you are working with very small tests, then you can apply these tests. But chi-square and Yeah, chi-square. chi-square is very common. Chi-square is applicable because chi-square is nothing to do with the sample size. Chi-square is applicable when both the variables are nominal. Yes, 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 sir. And sir, today is the last day, no, sir? Yeah, today is the last day because initially I decided to cover all the topic in 10 sessions, but one session is extra. So Thanks. there is no problem in that. Thanks a lot, sir, as usual, enlightening. And sir, in future, one request, if somewhere next year, at least January, or you said 1 or 2 months may not be, but January month, that is econometrics, totally. Econometrics, exclusive econometrics. Yeah, I will definitely try to bring new topics to you. Yes, और sir. पढ़ना जो है, जो स्टडी है वो थोड़ा मुश्किल होती है पढ़ने में, लेकिन हमारी जो अर्निंग कैपेबिलिटीज हैं और हमारा जो टैलेंट है वो पढ़ाई से ही बढ़ता है, तो हाँ हाँ पढ़ना सर, तो जरूरी वही है। सर, ऐसा है ना, इतना सारा आप सीख लिया है, अब एक इकोनोमेट्रिक्स का भी है, मगर knowledge once if you again because econometrics is never ending. या Thanks a lot, sir. Thanks a lot. थैंक्स। ओके, बिश्नोई। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर, मनोवा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है क्या? मनोवा इज नहीं, मनोवा इज ए पैरामेट्रिक टेस्ट। तो फिर सर मनोवा और अनकोवा इनका भी कुछ नॉन पैरामेट्रिक होता है क्या? मेरे ख्याल से तो पैरामेट्रिक होते हैं इसमें, क्योंकि ज्यादातर सॉफ्टवेयर में तो ये रिग्रेशन के थ्रू होते हैं, तो रिग्रेशन में तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट ही यूज कर सकते हो। मैंने कहीं नहीं, चांसेस नहीं है इनके नॉन पैरामेट्रिक होने के। अच्छा सर। एंड सर एक और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सर, जैसे इन पैरामेट्रिक का हाइपोथेसिस टेस्ट ऑफ डिफरेंस और इनका सबका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। अपन कोरिलेशन रिलेशनशिप की बात करते हैं, वहां भी काई स्कोर मतलब वो रिलेशनशिप के नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक दोनों होते हैं। सर रिग्रेशन का भी कुछ नॉन पैरामेट्रिक होता है? ऑर्डिनल रिग्रेशन होता है। ओके, ऑर्डिनल रिग्रेशन। हाँ, ऑर्डिनल रिग्रेशन होता है, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे अगर आप एसपीएसएस पे जाते हो तो आपको रिग्रेशन में ये ऑर्डिनल रिग्रेशन मिलेगा।
अच्छा सर। ये वाला। सो दिस इज ऑर्डिनल रिग्रेशन, लेकिन ये रिग्रेशन तभी होगा जब आपके सारे वेरिएबल ऑर्डिनल होंगे। सारे मीन्स इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सब ऑर्डिनल। सब ऑर्डिनल होंगे, हाँ, तब आप ऑर्डिनल रिग्रेशन लगा सकते हो। इट इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, अदरवाइज बट इट इज वेरी रेयर। ऑर्डिनल रिग्रेशन इज वेरी रेयर। ओके। एंड सर जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन या प्रोबेट रिग्रेशन की बात करते हैं तो वहां पे दो ही कैटेगरी होती है या फिर दो से ज्यादा भी कैटेगरी हो सकती है सर? दो से ज्यादा भी हो सकती है। एक्चुअली जो बाइवेरिएट है वो तो बाइनरी लॉजिस्टिक होगा, उसको हम कहते हैं बाइनरी लॉजिस्टिक। एक होता है मल्टी नोमियल लॉजिस्टिक, जिसमें आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं। ओके ओके, तो वो मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक हो गया, तो उसमें सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो स्केल वेरिएबल होंगे, पर ऑर्डिनल में सारा ऑर्डिनल हो जाएगा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। यस 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 यस, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों हो जाएंगे आपके। बेसिकली लॉजिस्टिक में तो वो प्रोबेबिलिटी है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल इज द प्रोबेबिलिटी, 0 and 1। हाँ सर, हाँ सर। एंड तो या सर फिर इस ऑर्डिनल में सर इसमें वो सारा कैटेगरी है, ऑर्डिनल डाटा है, तो उस पे रिग्रेशन कोफिशिएंट और ये निकल जाता है। वो सब निकल जाता है, लेकिन उसका मेथड डिफरेंट है तो, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ऑर्डिनल रिग्रेशन अलग चीज है, बहुत रेयर लगती है, बहुत रेयर। मैंने कभी देखा देखा नहीं लगा हुआ। सिर्फ हार्डली एक बार किसी ने वो ये जो 4 पॉइंट इसके ले रखा था, उस पे रिग्रेशन लगाया था, तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई आप इसमें ऑर्डिनल रिग्रेशन लगाओ क्योंकि आपका डेटा ऑर्डिनल है। तब हमें एक बार हमने ऑर्डिनल ऑर्डिनल रिग्रेशन लगाया था बस। ओके। एंड सर ये तो नॉर्मल रिग्रेशन की और ये हो गई सर, अभी कुछ वो मशीन लर्निंग में और उसमें सर वो कार्ड क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन ट्री और जो कुछ रैंडम फॉरेस्ट और वो सर क्या होते हैं, वो हायर हायर वर्जन है क्या है? नहीं, असल में ना क्या है कि मशीन लर्निंग के कुछ मॉडल्स अलग निकल के आए हैं। हालांकि है तो वो स्टेटिस्टिक बेस्ड ही, जैसे आपका रिग्रेशन तो बेसिक हो गया, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, फिर ANN मॉडल है, उसके बाद आपका डिसीजन ट्री मॉडलिंग है, उसके बाद आपका रैंडम फॉरेस्ट मॉडलिंग है, फिर आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन है। तो ये सारे मॉडल जो है वो मशीन लर्निंग में अप्लाई होते हैं, ये खुद ब खुद काम करते हैं। आप उनको डेटा देते रहो, ये आपको प्रिडिक्शन करते रहेंगे। उनके लिए सर डेटा सेट भी अलग टाइप का चाहिए होता है या नहीं इन्हीं नहीं, डेटा डेटा सेट पे सेट लग यही है, जाता है? डेटा सेट इज ऑलवेज सेम। डेटा सेट यही होता है, लेकिन वो आपके क्या है ना कि डेटा आता रहता है, आप प्रिडिक्शन करते रहते हो। रिसर्च में क्या होता है कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। आपने एक बार डेटा ले लिया, हाइपोथेसिस लगा दी, कंक्लूजन निकाल दिया, खत्म हो गया काम। ठीक है, तो रिसर्चर का काम डेटा के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन कंपनी में क्या होता है कि डेटा आता रहता है, प्रिडिक्शन होती रहती है, तो वो लगातार होती रहती है ना। तो उस कंपनी में क्या होता है कि डेटा आया, आज जैसे मान लो हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल में पेशेंट आया, जैसे हर डेली पेशेंट आते रहेंगे, तो आप उसमें उनकी प्रिडिक्शन अपने आप करते रहोगे कि भाई इसको बीमारी है नहीं है, बीमारी है नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अगर हम अब सीखना स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च, तो आपके जितना एक्सपर्ट होने हमें कितना वक्त लगेगा? नहीं देखो, एक्सपर्ट, ये मामला इंटरेस्ट का है और कुछ किसी का नहीं है। और मेरा आपको सजेशन ये है कि आप ना सारी चीजें मत सीखो। आप पहले ये देखो कि कौन सी टेक्निक में मेरा काम सबसे ज्यादा पड़ता है, तो अभी सिर्फ तो उसी पे अपने आप को पक्का करो। तो फिर सर क्या अभी रहने दें, क्योंकि अभी तो हमने रिसर्च प्रपोजल बनाना है, उसके बाद ये सब स्टार्ट होगा। नहीं नहीं, अगर आप इनिशियल लेवल पे हो तो ये तो जो मैंने पढ़ाया वो तो इनिशियल लेवल का ही था। ये ओके वाली सर। वर्कशॉप जो है ये तो इनिशियली है, मतलब ये तो सारा ही आना चाहिए आपको। लेकिन आफ्टर आफ्टर डेटा कलेक्शन ना सर? नहीं, असल में क्या है कि जब आप डेटा, आपको पता चल गया कि अनोवा क्या है, मनोवा क्या है, तब आप अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हो कि अब वो आपको पहले से ही पता होगा कि मुझे कौन सा टेस्ट लगाना है। करेक्ट सर। या
तो इसलिए आज की डेट में अगर आपको रिसर्च या स्टेटिस्टिक्स नहीं आती है तो हम्म, कोई भी आपको ना बेवकूफ बने जो बना देगा, ये पक्की बात है। जी सर। जैसे मान लो कोई कोई पैनल में कोई बैठा हो, वो जी आपसे कुछ भी बोल देगा कि आपने तो गलत किया है, तो वहां पर आपको डिफेंड करना आना चाहिए कि भाई मैंने सही किया है, मैं सही हूँ। जी सर। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपको नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। तो वो विलिंगली रोंगली पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन हाँ सर, बिल्कुल पूछते हैं, वो तो पूछेंगे कि ये तो आपने सब गलत किया। टू चेक आवर कॉन्फिडेंस। हाँ, यस। ये तो फैक्ट है, मतलब उनका जो एक्चुअली पीएचडी में होता ही क्या है ना, वो बेइज्जती करने के लिए बैठते हैं लोग। तो आप जैसे मान लो एक प्रेजेंटेशन चल रही थी, जी सर। तो स्कॉलर ने जेंडर लिखा होता, जेंडर मेल एंड फीमेल। जी सर। तो एक पैनल मेंबर ने पूछा कि आप ना जेंडर नहीं लिख सकते यहाँ पे, हम्म, जेंडर इज रॉन्ग वर्ड। जी सर। अब वो जो बंदा था वो ट्रेंड था, तो उसने कहा कि मैडम मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, मैं जेंडर को बिल्कुल हटा दूंगा, लेकिन आप मुझे सपोर्टिंग रिसर्च पेपर दे दो बस। ओ, जेन्युइन है, ठीक है ना। ग्रेट तो सर। जैसे ही मैडम ने ये सुना कि भाई सपोर्टिंग पेपर मांग रहा है, तो ये तो जी सीखा सिखाया है। जी जी तो तब वो कहेंगे ओके ओके ठीक है ओके, तो मतलब तो ना जी आपको सर। सही आंसर देना आना चाहिए। नहीं जी तो कोई सर। भी आपसे उठ के कह देगा ये तो गलत है। That's तो why we इसे are learning everything before formulating our questions, दैट इज research गुड। questions. या Yeah, thank you so much, sir. अनु। वेरी गुड इवनिंग सर। सर एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? आई वांट टू आस्क समथिंग आप इन दिस पूछो। पॉइंट शीट। एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर, आपको मुझे एक बार अनेबल करना पड़ेगा स्क्रीन शेयर करने के लिए। कर हाँ दिया। जी हाँ जी, एक मिनट सर। यस सर। सर ये स्क्रीन है, इज इट विजिबल टू यू? अभी हो रही है, लेट्स सी। यस सर, इज इट विजिबल टू यू? अभी शेयर हुई नहीं है, हो रही है, हेलो। मतलब प्रोसेसिंग में है, हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ सर, जैसे ना मैंने डेटा कुछ कलेक्ट किया है, उसका एक छोटा सा पार्ट है ये। इसमें जेंडर, इनकम और भी डेमोग्राफिक वेरिएबल है मेरे पास। ठीक है, मैंने सब दो यहाँ पे लिए हैं, और ना ये रिस्क टॉलरेंस को मेजर करने के लिए मैंने कोई स्टैंडर्डाइज स्केल लिया है। इसमें 13 क्वेश्चंस थे, तो फिलहाल 6 मान लेते हैं। तो हम्म, इसमें रिस्क लो है, मॉडरेट है या हाई है, उसके लिए ऑलरेडी स्कोर गिवन है कि ये स्कोर आए तो लो होगा, ये आए तो मॉडरेट होगा। तो मैंने इन सबका स्कोर निकाल लिया, इनका स्कोर ये आ गया सब। ठीक है, अब मैं इस स्कोर को, पहले बात तो इसको रेशो होगा, ये जो डेटा है रेशो डेटा होगा सर ये। बिल्कुल। ठीक है, और सर मैं इस स्कोर को इनसे लिंक कैसे करूंगी जेंडर से, कि मेल में ज्यादा रिस्क है या मेल, टेस्ट मेल लगेगा। कौन, टी टेस्ट सर? हम्म, और मेल किस कैटेगरी में आते हैं, ये टी टेस्ट बता देगा हमें मीन स्कोर से? नहीं ये तो एक वो बताया था ना मैंने आपको, रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। ये आज की क्लास में आपको हुआ है, मैंने वो मिस कर दिया एक्चुअली आज तो। वो सेशन नंबर 3 में देखो, सेशन नंबर 3 में मैंने कुछ कमांड बताई थी। अगर हाँ आप जी। उसको रिकोडिंग कर देते हो ना, एक कमांड होता है रिकोड, रिकोड टू द सेम वेरिएबल या डिफरेंट वेरिएबल। हम्म। तो आप इसको कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बाद फिर आप जो टेस्ट लगाना लगा लो। अच्छा, तो मैं थर्ड क्लास देख लेती हूँ वापस। तो इन, अच्छा सर, इन स्कोर को रिकॉर्ड कर देगा, इन स्कोर्स को, इस वाले यस सम वाले यस स्कोर को यस। रिकॉर्ड कर देगा। और हाँ, फिर मैं टी टेस्ट लगाऊंगी इसके अंदर। नहीं टी टेस्ट रिकॉर्ड करने के बाद तो कैटेगरी बन जाएगी ना। हाँ जी सर। तो कैटेगरी और कैटेगरी में तो फिर आपको कैश को लगाना पड़ेगा। काई स्क्वायर और इनकम के साथ भी काई स्क्वायर लगाना पड़ेगा मुझे ऐसे? हाँ, अगर आप रिस्क टॉलरेंस की कैटेगरी पे लगा रहे हो तो कैश स्कोर ही लगेगा, लेकिन हम्म। सम पे लगा रहे हो तो टी टेस्ट और अनोवा टेस्ट लगेंगे। तो सम पे लगा सकते हैं डायरेक्ट ऐसे? हाँ लगा सकते हो, सम पे तो ज्यादा बेटर है। सर सम पे लगा देती हूँ, फिर इजी रहेगा मेरे लिए भी। और क्या, वो ज्यादा बेटर भी है। तो सम पे फिर मैं टी टेस्ट और अनोवा लगाऊंगी एज पर द कैटेगरी, जैसे जेंडर में यस, टी टेस्ट, इनकम में अनोवा, बिकॉज दो से ज्यादा कैटेगरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज और, इसी स्केल के अंदर ना इनका स्कोर जो गिवन था क्वेश्चन 1 के अंदर, ए ऑप्शन का स्कोर 4 था, बाकी हम्म, सब में ए का 1 1 1 स्कोर था। तो मैंने क्या किया, ए ऑप्शन को डी बना दिया, बी को सी बना दिया, सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर, ताकि ए का स्कोर 1 हो जाए वहां पर भी, और ओके। पूरा स्केल क्रिटिकल हो जाए मेरे लिए। हम्म, तो ऐसा कर सकते हैं सर, एक क्वेश्चन के बस मैंने ऑप्शंस को ऊपर नीचे किया और कुछ नहीं, लैंग्वेज चेंज नहीं की मैंने।
जी ठीक है, वो तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर लैंग्वेज में सेम कॉपी कर सकती हूँ ना, पहले फ्लैग में तो नहीं आएगी सर लैंग्वेज जैसे क्वेश्चन की? लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देना। अच्छा, स्केल हम एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते किसी और का? हाँ, ना ना, आई हैव टू चेंज, मतलब उसको पैराफ्रेजिंग कर दूं मैं उसको? बिल्कुल पैराफ्रेज तो करना पड़ेगा आपको। ओके। एंड सर वन मोर क्वेश्चन सर कि अगर मैं ये बोलूं सैंपल साइज के लिए कि आई हैव टेकन 10 टाइम्स ऑफ द स्टेटमेंट, सो इज इट फाइन टू से दिस? वो तब लगता है जब आप अगर आप स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग लगा रहे हो ना, हाँ, तो तब वो ये वाला रूल कम आएगा। कि सैम तो लग रहा है मेरी थीसिस के अंदर। सैम लग सकता है तो फिर तो ये रूल लगेगा। तो मुझे कोई फॉर्मूला शो नहीं करना पड़ेगा सैंपल साइज जस्टिफाई करने के लिए? नहीं, ओके, दिस थिंग इज सफिशिएंट। और सर वन लास्ट क्वेश्चन, कि जो एग्जामिनर होता है क्या वो रिस्पॉन्स शीट भी ओपन करवा सकता है डेटा शीट की बजाय? बिल्कुल कर सकता है। नहीं, रेस्पॉन्स शीट तो एक्चुअली देखो, रेस्पॉन्स शीट में तो एक फायदा ये है कि गूगल में ना, एक बार आपने रेस्पॉन्स शीट में कोई चेंज कर दिया तो वो वही रेस्पॉन्स शीट खुलेगी, तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट सर वो रिस्पॉन्स शीट ओरिजिनल होती है, जब हम डेटा एनालाइज करते हैं तो हम कुछ कुछ डेटा चेंज कर देते हैं एनालाइज करते हुए रिजल्ट डालने के लिए। नहीं, अगर आप रेस्पॉन्स शीट में भी चेंज कर दोगे ना तो वो भी पकड़ में नहीं आता। हम्म। अच्छा, वो गूगल से डाउनलोड करने के लिए तो नहीं बोलेंगे ना, जीमेल से डाउनलोड करके दिखाओ हमें सीधा रिस्पॉन्स शीट, इतना तो नहीं जाएंगे वो लोग? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप डाउनलोड भी करोगे ना तो वो भी मैनिपुलेशन हो सकता है। अच्छा, वो भी पॉसिबल है? और क्या। अच्छा, ये नहीं सोचा मैंने। ठीक है सर, मैं एक बार इसको भी सर्च करती हूँ ऑप्शन भी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। एंड सर आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट वर्कशॉप जो आपने प्रॉमिस किया था कि आप मोस्टली करवाओगे इसके बाद, एसपीएसएस सैम के ऊपर जो आपने प्रॉमिस किया था कि आप वो करवाओगे अब। ठीक सो है, आई मैं रियली बिल्कुल होप कर वही होगी अब। थैंक यू सो मच सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर। या हेलो। हाँ, एम गुड के गुड वर्मा। इवनिंग सर। हाँ जी सर। सर एक चीज पूछना था, जैसे लाइक यस्टरडे आज की सैंपल साइज को जस्टिफाई करने के लिए कोई आपने कुछ बताया था, है ना, जो जिसका आप कह रहे थे मैं यूट्यूब शेयर करूंगा। तो सर उसके अंदर ये भी है थोड़ा सा कि लाइक वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जैसे मैं नॉर्थ इंडिया का ले रही हूँ, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एंड 400 सैंपल है। तो दिस मीन्स कि आई हैव टू टेक द टोटल सैंपल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसका सम टोटल भी लेना पड़ेगा मेरे को? वो तो पॉपुलेशन हो जाएगी ना आपकी, कि पूरे जैसे आप फैकल्टी से भरवा रहे हो, तो पूरे हाँ जी। नॉर्थ इंडिया में कितनी फैकल्टी है, टोटल फैकल्टी कितनी है। तो टोटल नॉर्थ इंडिया की लूंगी ना वो, कि आई आइडेंटिफाई द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कि हाँ मुझे इनसे भरवाना है, इन इंस्टीट्यूशन से भरवाना है, और उस यूनिवर्सिटी की पॉपुलेशन नहीं वो नहीं तो नहीं, वो नहीं? यूनिवर्सिटी नहीं, नहीं वो तो आप पूरा पॉपुलेशन तो पूरा होता है, कि पूरे जैसे आपका नॉर्थ इंडिया आपका टारगेट पॉपुलेशन है, तो पूरे नॉर्थ इंडिया में कितनी फैकल्टी हैं वो सब पूरे टारगेट पॉपुलेशन के अंदर आएंगे। तो सर इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? ये तो किसी रिपोर्ट में अगर दिया होगा तो दिया होगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि या तो यूजीसी के पास होती है रिपोर्ट या एआईसीटी के पास होती है, तो कोई ना कोई गवर्नमेंट बॉडी होगी जिसमें रिपोर्ट होंगी कि कितनी फैकल्टी हैं। ठीक है, तो सर मतलब उसमें से हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से आ रही है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और फिर टोटल नंबर लेना पड़ेगा। यस। ठीक है जी, ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके, एम के वर्मा। Yes, sir. Good evening, sir. Sir, what is F test? व्हाट इज, हेलो। Yes, sir. What is a F test, sir? Is it a parametric or non-parametric test? एफ टेस्ट तो अनोवा का, अनोवा टेस्ट हो गया ना, एफ टेस्ट तो अनोवा को कहते हैं। जब आप अनोवा लगाते हो तो उसमें एफ टेस्ट आता है, Okay, तो so वो तो पैरामीट्रिक है ना एफ टेस्ट तो। mhm. Okay, that is what I wanted to ask, sir. Thank you. या मनीषा। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो मैंने पहले भी ऑफलाइन 2 अटेंड की हुई है बट आज तक कुछ समझ में नहीं आया एंड आई थिंक आपके अटेंड करने के बाद, या फिर ऐसे कह लो मैं अभी डेटा एनालिसिस स्टेज पे हूँ, तो बहुत अच्छे से समझ में आया। आई वांटेड टू टेल यू।
और पहले मैंने ILBS में बायोस्टैटिस्टिक्स की वो किया था एक, वहाँ पे वो पूरा हॉस्पिटल रिलेटेड ही बताते हैं, बट बहुत ज्यादा क्लिनिकल था वो। बट स्टिल स्टैटिस्टिक्स तो स्टैटिस्टिक्स ही थी। बट अभी आपके पास आके ही यहाँ पे मतलब लाइक टर्मिनोलॉजी सारी बहुत अच्छे से समझ में आई है मुझे। चलो अच्छी एंड बात है, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर तो गुड। नहीं, सर वैसे काफी अच्छे से ही कराते हैं। बेसिक एजुकेशन में स्टैटिस्टिक्स था क्या? BSc स्टैटिस्टिक्स से आपने स्टार्ट किया था? नहीं, मैथ्स मेरा शुरू से ही फेवरेट सब्जेक्ट है, तो हाँ, मैथ्स के साथ में लाइक आई थिंक स्टैटिस्टिक एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, या फिर मतलब आप कैलकुलेशंस में तो अच्छे हैं ही, सो दैट्स गुड। मतलब वो एक क्वेश्चन पूछ रही थी ना लड़की सम कि भी आप जितना एक्सपर्ट होने में कितना टाइम लगेगा। I have never seen such expertise in any faculty as Ajay sir is having. Really. नहीं, बट एज अ रिसर्चर आई थिंक अगर हम 3-4 टाइप के भी ये सॉफ्टवेयर्स को डील करना सीख जाएं तो हम कर पाएंगे। मतलब पब्लिकेशन और उसका जो मेन क्रक्स होता है कि सर से ही सीखेंगे। कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरे जैसे आपको पता ही है कि 2-3 टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर है, एक मैनेजमेंट का है और एक का है। तो मैनेजमेंट में तो मेरा अराउंड 7 हॉस्पिटल्स का डेटा है, और एम्प्लॉयज में मतलब ओपन मार्केट से वो फिर अराउंड 100 या फिर 120 तक है। सो इसमें और किस तरह के लाइक मुझे क्या सेम सीखना चाहिए, और इसमें क्या क्या सेम एप्लीकेबल? तो लगाने पड़ेगा ना, कि एक्चुअली क्वेश्चनर से जब भी हम डेटा लेते हैं तो सिर्फ टी टेस्ट और अनोवा से काम नहीं चलेगा आपका, आपको सेम तो मतलब अगर लग सकता है तो लगा लो, क्योंकि वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, सेम भी लगेगा, और PLS और ये अमोस वो वाले पीएलएस एरिया? और पीएलएस तो सेम का ही एक सब्स्टिट्यूट है, जैसे टी टेस्ट हो गया या मैन विटने हो गया, उसी तरह से एमओस हो गया या पीएलएस हो गया, वो एक ही बात है। रुक जा, सॉरी एक्चुअली माय सन वाज डिस्टर्बिंग। तो मुझे सेम की क्लासेस भी लेनी चाहिए आपसे, एंड तो लेनी चाहिए, वो क्योंकि भी वो सीखनी चाहिए मतलब? जरूरी है। सैम तो अगर आप डेटा क्वेश्चनर से भरवा रहे हो ना, तो सैम हम्म, आपको आना ही चाहिए। और सैम भी मैं आपको बताऊं, ये इससे भी आसान है। ये वाली जो स्पेशल वाली वर्कशॉप थी, इसमें तो फिर भी थोड़ा टेक्निकल था, सैम में तो कुछ भी हम्म, टेक्निकल नहीं है, तो सैम तो बहुत ही आसान है। ओके ओके। सो NVO तो थोड़ा बहुत समझ में आया, NVO में भी कुछ समझ में, मतलब लाइक उसका वो थीमेटिक एनालिसिस में। बट फर्दर अभी मतलब 2 अलग अलग लगेंगे मेरे उसमें, हाँ। और ये जो हॉस्पिटल वाला है, आई थिंक ये तो फिर नॉन पैरामेट्रिक में जाएगा। नहीं, वो हम खैर वो देख लेंगे बाद में। अच्छा, हाँ नहीं, आप वन स्टेप एट वन टाइम बहुत फोकस्ड रहते हो, तो मैं थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इतना सारा मेरा वो है, तो लाइक क्या क्या ओवरऑल ओवरव्यू पूछ रही थी आपसे, तो चलो खैर वो या वो देख लेंगे बाद में। हाँ जी हाँ जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। या ओके प्रिया, Yes, good evening, sir. गुड इवनिंग। Thank you so much, sir. You are gem in the field of statistics. So thank you so much. Thank you for this wonderful workshop. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. यही बोलना था आप सर, न्यू जो भी वर्कशॉप आएगी अब आप कर दो पब्लिश जो भी है, फिर हम कर लेंगे। श्योर सर। ओके सर। शिल्पा। गुड इवनिंग सर। सर एक बस छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे मैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे वर्क कर रही हूँ, तो मैंने अपना सैंपल जो है सिर्फ पंजाब को लिया, लाइक जो सैम्पलिंग फ्रेम जहाँ से मैंने सैंपल उठाया। तो सर इसकी क्या जस्टिफिकेशन हम देखते हैं दे सकते हैं कि वो अगर पूछे पैनल मेंबर की वाई पंजाब, बाकी स्टेट्स आपने क्यों नहीं लिया? पंजाब को अब पॉपुलेशन मत मानो, पहली बात तो ये है। कभी भी यस सर। पंजाब को ना पॉपुलेशन नहीं हो सकता। सर जैसे सैम्पलिंग फ्रेम अगर मैं कहूँ डेटा लिया मैंने उनका। नहीं, सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब होता है कि आपका जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। ओके।
सो लोग सैम्पलिंग फ्रेम को बहुत कंफ्यूज करते हैं, कोई काफी सारी किताबों में सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब टारगेट पॉपुलेशन लिखा होता है, नहीं है, ऐसा नहीं है। सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके पॉपुलेशन का डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे फैकल्टी का डिटेल आपको कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाता है, तो वो यस सर। सैम्पलिंग फ्रेम हो गया। जैसे आपके केस में एमएसएमई का डिटेल जो है ना वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वो यस सर। सैम्पलिंग फ्रेम यस हो सर। गया। तो सैम्पलिंग फ्रेम एक टारगेट पॉपुलेशन हो सकती है, पॉपुलेशन नहीं होगी, पॉपुलेशन तो आपका ब्रॉड एरिया ओके, है। तो ठीक है सर। आपको कभी भी पंजाब एज ए पॉपुलेशन तो बोलना ही नहीं है। ओके। पॉपुलेशन तो आप बोलोगी एमएसएमई ऑफ इंडिया इज माय पॉपुलेशन एंड आई एम टेकिंग डेटा फ्रॉम पंजाब। पंजाब आपकी ओके, टारगेट पॉपुलेशन है। तो सर यही वो अगर पूछे कि वाई पंजाब ओनली। तो देखो, जो लोग दिल्ली से करते हैं वो एनसीआर को लेते हैं, जो पंजाब में वो पंजाब ले रहे हो, तो यस अप्रोचेबल सर। जो है ना वो ले सकते हो। आप बोलो कि भाई पंजाब इज ए ग्रोइंग स्टेट एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ओके, ठीक है सर। और ओके। दूसरी बात है कि ये आप पंजाब से बिलोंग करते हो, तो ये अप्रोचेबल भी है आपके लिए। आप यस कहीं सर। केरला तो नहीं जा सकते ना डेटा कलेक्ट करने, तो आप बोलोगे भाई पंजाब मेरे अप्रोच में है। ओके सर। ओके, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर एक पॉइंट और था, जैसे लाइक व्हेन वी आर यूजिंग द टूल्स, जैसे क्वेश्चन है जो भी यूज कर रहे हैं, तो सर उसकी वैलिडिटी हम लोग कैसे कर सकते हैं? वो तो वैलिडिटी उन्हीं की लेनी पड़ेगी ना जिनका टूल है, वॉट एवर दे हैव जस्टिफाइड। ये ये गलत प्रैक्टिस है कि आप उनसे टूल लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कोई चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिश्ड है तो वहां से आप यूज कर सकती हो। आपको रिसर्च में रेफरेंस देना होता है, परमिशन लेनी नहीं होती कभी भी। ओके। और सर जैसे कई बार जैसे लाइक आई यूज माई टूल, तो मेरे को डिफेंस में थोड़ा सा जो डीसीएस हमारा होता है उसके अंदर जैसे पूछा था कि ये टूल पुराना है, लाइक आई यूज्ड द टूल ऑफ 30 years बैक, तो वो उन्होंने पूछा कि इसकी वो वैलिडिटी क्या है? हाँ, वो सही क्वेश्चन है, क्योंकि आप जो 20-25 साल पुराना टूल क्वेश्चन यूज कर रहे हो, तो वो तो 30 साल में तो हजारों चीज चेंज हो गई। तो वहां पर आपकी भी गलती है कि भाई आपने इतना पुराना टूल यूज क्यों किया, आपको लेटेस्ट यूज करना चाहिए था। तो सर अराउंड कितना इयर्स बैक वाला करना चाहिए? मैक्सिमम 5 साल तक आप पीछे जा सकते हो, उससे पीछे जाने का कोई लॉजिक नहीं है। ओके, ठीक है तो सर। कोशिश करिए कि पिछले 5 साल तक ही जो नया कुछ नए डेवलप हुए हैं उन्हीं को लिया जाए। ठीक है सर। और सर एक चीज और पूछना था, जैसे ऑपरेशनल डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं और एक टर्म और होती है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो हो गया हाइपोथेसिस जो आपको चेक करनी है, ठीक है जी। ठीक है ना। और डेफिनेशन तो अब पेपर में नहीं आती है, क्योंकि डेफिनेशन तो किताबों में लिखी जाती है, रिसर्च पेपर में नहीं लिखी जाती। और सर वो मैं तो पूछ लेते आपको हैं यही कई बार। बोलूंगा कि थीसिस में भी मत लिखना। अच्छा डेफ सर, लेकिन जैसे वो लोग पूछते हैं ना, उसमें हमारे उसमें भी है टेम्पलेट में, और उसमें कि इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है? नहीं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो लॉजिकल है कि क्योंकि वो तो हाइपोथेसिस आप टेस्ट करोगे, तो उस पे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप होता है। लेकिन डेफिनेशन तो अलग चीज है, डेफिनेशन तो किताबी है, मतलब वो तो आप जस्ट कॉपी कर सकते हो किसी की, है ना। तो लेकिन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो बनेगा बनेगा, वो तो बनता है। दैट विल बी एप्लीकेबल, मतलब वो बनेगा उस डेफिनेशन पे जो हम अपनी स्टडी में नहीं, अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेशन जैसे बहुत नहीं सारी डेफिनेशंस हैं, तो जो डेफिनेशन का एप्लीकेबल हमारी स्टडी के लिए है वो। मेरे ख्याल से ना आपको क्लैरिटी नहीं है इस टॉपिक की फिर अभी। डेफिनेशन और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क किसी भी सेंस में रिलेटेड है ही नहीं। डेफिनेशन और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का कोई कोई आसपास कोई मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ नहीं सर, रिलेशन तो नहीं है, बट जैसे थीसिस मैंने देखी थी काफी सारी, तो उसमें ना ये टर्म्स अलग अलग उसमें लिखी हुई हैं कि इसका ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है। जैसे लाइक कई कहते हैं कि जो टूल आप यूज कर रहे हो और जो ऑथर ने दिया हुआ है उस टूल के, मतलब वो दैट विल बी द ऑपरेशनल डेफिनेशन फॉर आवर स्टडी। मतलब वो तो मुझे पता है, दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट है।
बट मेरे को थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन है कि व्हाट विल बी दैट टर्म एंड व्हाट विल बी दिस टर्म। देखिए डेफिनेशन तो हम किसी भी किताब से कॉपी कर लेते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर बिल्ड होता है, उसका डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। सर थोड़ा सा एक एग्जांपल दे सकते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का? मैं आपको बताऊं, आप कोई से भी रिसर्च पे उठा के देख लो, कोई सा भी, ठीक है। हाँ जी। तो डेफिनेशन तो पहली बात तो है कि ना तो रिसर्च पेपर में आती है ना थीसिस में आती है। और आई डोंट नो कि आपसे कोई पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है, क्योंकि रिसर्च में, किसी भी रिसर्च में डेफिनेशन के आने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन किसी भी रिसर्च पेपर में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होना जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका मॉडल बिल्ड होता है। ठीक है, हाँ तो रिसर्च सर, पेपर थोड़े से मुझे ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन आप कोई भी पेपर निकालोगे ना, कोई भी पेपर उठा लो जो आपने पेपर I want पाओ। to add into this. There is हम्म, one conceptual model and one is theoretical model. Theoretical model means जो already जैसे तो रहता theory है। से proved है, like जो relationship already theories में prove हो चुकी है, आप उसमें कुछ add on कर रहे हो and that is your own conceptual model, own research model. So yours is a conceptual model जो आपने create किया है, उसको फिर आप hypothesis से check करो। यस। सो ये एक आइडियल तरीका हो, जितना मुझे समझ में आया अब तक। हाँ नहीं वो ठीक है, दैट्स गाइड्स, फाइन। लेकिन उसका डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं होता, डेफिनेशन हाँ तो। डेफिनेशन से उसमें हम्म, कुछ नहीं होती। थ्योरेटिकल मॉडल मींस जो ऑलरेडी प्रूवन है इंडस्ट्रीज में, जो थ्योरीज के थ्रू, या थ्योरीज मतलब जो बार बार एक ही चीज को रिसर्च प्रूव कर चुके ऑन डिफरेंट पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये तो ना, जैसे अगर आप वो गूगल भी करते हो ना, तो आपको थ्योरेटिकल मॉडल तो बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आप लिखते हो, तो आप देख रहे हो ये, जैसे ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क है, ठीक है। जैसे ये फ्रेमवर्क है, तो ये सारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हैं और हर लाइन एक हाइपोथेसिस है इसमें। तो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये तो पीएचडी में होना जरूरी होता है कि भाई आपने कौन सा थ्योरेटिकल मॉडल टेस्ट करना है। ये सारे थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं, ये तो पेपर में होंगे ही इस तरह के मॉडल, ठीक है ना। हाँ जी सर। हम्म। ये तो आपको कोई भी पेपर उठा के देख लो, थ्योरेटिकल मॉडल तो उसमें हर मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर किसी पेपर में हाइपोथेसिस है तो थ्योरेटिकल मॉडल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और उसके लिए सर जैसे हम क्या वो जैसे पूछते हैं ना कि आपका कोई बेस पेपर है इसका, तो बेस पेपर मींस वो वाला पेपर मुझे ना बिल्कुल। स्ट्रांगली, मैं इसे बता रहा हूँ, ये मुझे स्ट्रांगली डाउट हो रहा है कि तुम बहुत ही घटिया लोगों के बीच में बैठी हो। सर क्योंकि जो मैंने दो तीन देखी थी थीसिस ना, लाइक रिलेटेड टू एजुकेशन, इस पे नेट पे भी और अपने वहां पे भी, तो मतलब उसमें नहीं, कुछ टर्म्स ऐसी किसी ने कुछ लिखी हुई थी, किसी ने कुछ लिखी हुई थी, तो बेस पेपर जैसी चीज ना कोई कुछ नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं, एज अ बेस पेपर ना ये एक हवा हवाई है, ऐसा कोई टर्म नहीं होता है। मैंने आज तक ऐसा कोई टर्म किसी भी रिसर्च पेपर में नहीं पढ़ा। ये तो नहीं हम सर अब, पेपर में नहीं होता वो, मतलब पूछते हैं ना, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कई बार कि इसका बेस पेपर आपने कोई सिलेक्ट किया है बेस बेसिकली क्या है मॉडल ना, पे। जो आपसे पूछ रहे हैं ना वो घटिया फैकल्टी है। जो आपसे ये सवाल कर रहा है उसको रिसर्च नहीं आती, दिक्कत ये है। एक्सटर्नल में थोड़ा सा पूछा था मेरे से, दो तीन क्वेश्चन था इस तरह नहीं वो के। बिल्कुल पूछेंगे आपसे, जो क्योंकि इंडिया में तो हर तरह के लोग हैं ना, तो जिसको जी। जितना आता है वो उतना ही पूछेगा, सीधी सी बात है। हाँ जी। ठीक है। बेस पेपर जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। या अनु। अरे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तुम्हारा आमोस में बन जाता है ना शायद, मतलब किसी हाँ सॉफ्टवेयर थ्योरेटिकल बना सकते फ्रेमवर्क हैं आप ना। एमओएस पे बना भी सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो। ना वो बन जाता है, मैंने देखा है इसको वहां पे। और आप सर बना एक ही सकते मैंने हो। खुद भी ना मैंने खुद भी ना 2000 का स्केल रेफर किया अपने थीसिस के लिए वैसे। बट वो स्केल जो है अभी भी लेटेस्ट यूज हो रहा है बाकी पेपर्स में भी। आई कैन गिव रेफरेंस ऑफ दोस पेपर ना कि ये इन पेपर्स में अभी भी यूज हो रहा है, तो इट इज मतलब वेरी मच इन राइट नाउ ऑल्सो। बिल्कुल, वो लिटरेचर सपोर्ट आपके डेफिनेटली काम आएगा। तो वो मैं उसको सपोर्ट कर सकते अपने उसको। यस।
वन लास्ट थिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली, थैंक यू सो मच। मेरा बस चले तो मैं गाइड की जगह आपका नाम लिख दूं थीसिस के अंदर, क्योंकि जितना आपने गाइड किया ना उतना तो मेरे गाइड ने गाइड नहीं किया मुझे अब तक। एक्चुअली आई एम सेइंग दिस थिंग, आई रियली वांट टू राइट योर नेम इन प्लेस ऑफ माय गाइड नेम। So this is true. I'll also सर add this is एक्चुअली true. सर आपको तो पूरा कोर्स में कराना चाहिए सबको, मुझे लगता है कि कुछ तो लोग समझे कि रिसर्च होती क्या है इंडिया में। रिसर्च का लेवल तो कम से कम अपग्रेड होगा कि लोगों को समझ में आए कि रिसर्च करनी कैसे होती कैसे है। सही इतनी बात है वो। कंफ्यूजन है सर मार्केट के अंदर, इतनी कंफ्यूजन है मार्केट में। सही बात है, लेकिन मैं वही तो कर रहा हूँ, मैं यही तो जैसे डेवलप इट कर इज रहा हूँ। नीडेड सर, मतलब मैंने ऐसे वर्कशॉप नहीं देखी जहाँ पे लोगों के क्वेश्चन आंसर राउंड ही ज्यादा नॉलेजेबल राउंड है, मतलब वहां पे इतनी नॉलेज मिलती है क्वेश्चन आंसर सुनने से लोगों के, एंड वी वेट फॉर एक्चुअली दैट। बहुत सारे लोग ना वर्कशॉप इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो इन सवाल के आंसर नहीं देते। सर मैं अभी एक एफडी पे अटेंड कर रही हूँ और मैंने उसका एक वर्ड नहीं सुना, क्योंकि मुझे टीचर पे ट्रस्ट ही नहीं है तो मन ही नहीं करता सुनने का वो। और आपकी एफडीपी खत्म हो रही तो ये सुन के गंदा लग रहा है कि हमारे क्वेश्चन आंसर आंसर कौन करेगा। सर आप चलो कल कर से ही दो। नेक्स्ट स्टार्ट कर सर दीजिए। हाँ सर प्लीज आप मोस्ट को तो स्टार्ट कर ही दो, हमारी नॉलेज अमोस में हाँ कंप्लीट मैं हो जल्दी जाएगी। स्टार्ट कर रहा हूँ। सर क्योंकि मुझे लगाने थीसिस में आपसे पढ़ के लगाऊंगी मैं थीसिस में ये तो। श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड आंसरिंग एवरीथिंग। थैंक यू सो मच सर। या महेश। ओपन यूनिवर्सिटी चला रखी हो सर आप रिसर्च के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम अपने सुपरवाइजर से पूछने के बदले आपसे पूछ रहे हैं बहुत सारी बात। ये पूछना था सर, मुझे भी एक चीज में रिसीव करना है। जैसे कि आपने बोला टोटल टारगेट पॉपुलेशन मेरा होल कंट्री का होना चाहिए, हम्म नहीं टोटल होल पॉपुलेशन। फिर टारगेट हम्म पॉपुलेशन मैंने भी वन प्रोविंस से लिया है ना। हम्म और उसके हिसाब से मेरा तो जब मैं स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करूं तो वो फार्मूला का करूं तो मेरा तो स्टडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा सर। मैं लोकल गवर्नमेंट से डेटा ले रखा हूँ तो बहुत जो ज्यादा होगा, तो हैंडल करने में बहुत काफी परेशानी हो रही है सर। और उससे रेस्क्यू करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ सर? जैसे कि मेरा टोटल नेपाल का पॉपुलेशन है 753, राइट। उसमें मैंने जो प्रोविंस को सेलेक्ट किया है उसका पॉपुलेशन है 119, राइट। एंड मैंने एक थ्रेशोल्ड जो बनाया है उसमें पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड लगाकर उससे होता है मेरा 52, राइट। अगर मैं 52 को एक्सेप्ट करूं तो वो टोटल पॉपुलेशन का 6% से ज्यादा नहीं बनता। उससे फिर कोई तो दिक्कत नहीं है। आपका जो सैंपल साइज है ना, सैंपल साइज आप 400 से ऊपर रखो, आपकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। हाँ ठीक है सर। सर एक कोशिश ये बात, करना कि आपका जो सैंपल साइज हो, जो अगर आप क्वेश्चनर से डेटा ले रहे हो तो आपका सैंपल साइज सेकेंडरी डेटा और क्वेश्चनर बोथ से कर रहा हूँ सर मैं। नहीं, अगर आप सेकेंडरी डेटा से कर रहे हो तो उसमें सैंपल साइज आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे काउंट काउंट होता है। हाँ जी। हाँ तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी है वो काउंट होंगी। लेकिन अगर आप प्राइमरी डेटा से कर रहे हो तो कितने लोगों से आपने डेटा लिया वो काउंट होगा। तो दोनों मतलब जो प्राइमरी डेटा के सैंपल फॉर्मूले हैं वो सेकेंडरी डेटा पे नहीं लगेंगे। हाँ जी, थैंक यू सर। तो उसमें कंफ्यूज मत करना आपकी, मैं प्राइमरी डेटा का फार्मूला सेकेंडरी डेटा पे लगा लूँ, वो नहीं हो सकता। ठीक है सर। हाँ मैं वैसे प्लान कर रहा हूँ। और एक बात सर, मैं जिस एरिया में रिसर्च कर रहा हूँ वो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इस एरिया में एक दिक्कत ये आ रहा है सर। जैसे कि यूरोप में और अफ्रीका में और यूएस में, इवन इन ऑस्ट्रेलिया, all entity applying the accrual accounting system, and all the paper are based on the accounting accrual accounting system, where adjusted income statement and liabilities बैलेंस शीट सब बनता है उसी हिसाब से। वो डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को। और मेरे कंट्री में जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो कैश बेसिस या बैलेंस शीट पे होता है। और मैं जितने भी मैंने बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर आई हैव कलेक्टेड, all are on the basis of Indonesia, Africa, Spain, Italy, and or European countries and United States. Then I'm having issues, sir.
if you do have any access, then I heartily request you, sir, to provide some papers which are based on the cash-based accounting system. देखो ये तो एक फाइनेंस अकाउंटिंग रिलेटेड इशू है ना, हाँ जी, तो वो तो आपको अगर गूगल स्कॉलर में मिल रहा है तो ही वो कहीं और मिलेगा आपको, क्योंकि अगर कोई चीज गूगल स्कॉलर पे नहीं है तो वो बाकी जगह भी नहीं होगी। हाँ जी। तो अगर आपको कोई पेपर ऐसा है जो गूगल स्कॉलर पे है बाकी जगह नहीं मिल रहा है, उसको तो ढूंढ सकते हैं, है ना। लेकिन नहीं, जो गूगल सिस्टम, गूगल स्कॉलर में और जेस्टर में, इवन जो फ्री में मिलता है सर, जो वेब ऑफ साइंस का एल्सवियर में, उसमें भी देखा है। नहीं, जहाँ जहाँ कहीं देखा उसी हिसाब से पेपर मिलता है। और जो मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर कर रहा हूँ उसके लिए मुझे काफी दिक्कत हो रहा है सर, ये एक प्रॉब्लम है। तो और आप सर उसको ये, क्वालिटेटिव साइड भी जा सकते हो ना, आप तो क्वालिटेटिव स्टडी भी कर सकते हो फिर। हाँ, तो है। अगर आपको सेकेंडरी डेटा में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप जी, उसको क्वालिटेटिव साइड ले जाओ, हाँ, वो आपके लिए इजी भी होएगा और जेन्युइन भी होगा और ऑथेंटिक भी है। हाँ सर, मुझे मुझे मिडल पॉइंट में आ चुका हूँ ना सर, मैंने सेकेंडरी का सारे डेटा एकत्र कर चुका हूँ। और जब मैं वेरिएबल मेजर करने में जुटा तो फिर ये परेशानी हो गई सर। फिर लिटरेचर ढूंढने के लिए बहुत रात बिता चुके हो, मिलता नहीं है, ये आप इशू आ रहा है सेकेंडरी डेटा में ले जाओ सर, प्राइमरी में, तो नहीं क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव में। सॉरी, हाँ वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। हाँ सर, एक बात और ना, ये इलिसिट या क्या बोलता है ना सर, एक ऐप है ना गूगल हम्म। पे, उसमें मिलता है। उससे जो चाहे पेपर को एनालिसिस कर, रिव्यू करके मेथोलॉजी को, फिर एब्स्ट्रैक्ट को, मिनी टाइटल को, फिर वो सबको रिव्यू करके दे रहा है ना सर, वो कितना ऑथेंटिक है सर, एलिसिट? मुझे उसका आइडिया नहीं है सर, हाँ, हाँ, वो करता है। मैंने इसका नाम ही नहीं सुना। एलईसी क्या है ये? ये एक ऐप जैसा होता है सर, ओपन ओपन ऑनलाइन होता है। जब आप उसमें पीडीएफ का फाइल अपलोड कर दो तो एनालिसिस करके देता है सर, शॉर्ट एनालिसिस करके देता है। आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं देख लूंगा उसमें क्या होता है। ठीक है सर, ठीक है सर। और बाकी तो मैंने शुरू में ही बोला था, आपके सेशन बहुत बहुत सुंदर है सर, बहुत इनलाइटेड है। काफी बहुत सीख रहे हैं सर, मगर उतना जितना आप देना चाहते हो उतना तो हम ले नहीं पा रहे, फिर भी कोशिश करेंगे, कोशिश जारी रहेगा। और फिर अगर आपका बहुत गनीमत होगी कि हम स्टाटा जल्दी सीख पाए, क्योंकि मैं ये सेकेंडरी डेटा को स्टाटा में फीड करना चाह रहा था, और मेरा सुपरवाइजर भी बोल रहा तुम स्टाटा सीख लो। और यहाँ सीखने को नहीं मिला है। सॉफ्टवेयर तो मैंने खरीद कर चुका हूँ, मेरे पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर है स्टाटा का, मगर मेरी प्रैक्टिस करने के लिए मुझे आप जैसे इंस्ट्रक्टर का जो मटेरियल हो वो बहुत सपोर्ट करेगा सर। इससे मैं बार बार मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा टेक्स्ट आप पर पहुंचे या नहीं किया व्हाट्सएप पे। देखूंगा सर मैं, क्योंकि काफी सारे टेक्स्ट आते हैं तो मैं ज्यादा। हाँ नहीं, मेरा फोन बिगड़ा हुआ है, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ ना सर। ठीक है, मैं देखता हूँ सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, या प्रियंका। इवनिंग सर। सर गुड सबसे मॉर्निंग। पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई जो आज तक नहीं हो पा रही थी। अच्छा, और गुड। सर दूसरी चीज ये है सर, आप बहुत टाइम से कह रहे थे क्वेश्चनर के ऊपर आप एक वर्कशॉप लेंगे, क्योंकि सर बहुत चीजें ऐसी होती है आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली हो रही है, क्लैरिटी सर आपसे ही मिल पा रही है। ये चीज सर सबने फील की है, ये मेरी अकेले की नहीं है। तो सर एक बार उसको जरूर करवा दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे आती जाएंगी वो पीछे रह जाएगा। और लाइफ लॉन्ग मुझे लगता है एक बेस है हमारे लिए, एक चाहे थीसिस है चाहे रिसर्च पेपर है, वो कभी भी सर कोई क्लियर नहीं कर पा रहा। जिससे भी पूछा सर वो चीज नहीं मिल पा रही हमें। सर ठीक है। इसके बाद इमीडिएटली क्वेश्चनर करवा दो सर, आपने लास्ट टाइम भी कहा था आप करवाओगे सर, वो हो नहीं पाया। इसके बाद इमीडिएटली वही करवा दीजिए सर, क्योंकि बहुत जरूरी है सर वो, क्योंकि सबको ही रिसर्च पेपर लिखने होते हैं। तो हम लोग सर इधर उधर कहीं पे भी सर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता हमें उस चीज में। चलो, क्वेश्चन एंड डेवलपमेंट की वर्कशॉप होगी तो वो सिर्फ 2 दिन की होगी ज्यादा।
अच्छा सर, कोई बात नहीं, 2 दिन की कर दीजिए, जिससे एक बार माइंड तो क्लियर हो जाएगा सर, जो भी रहेगा। इसके बाद इमीडिएट वही पहले कर दीजिए, बाकी चीजें तो सर आती रहेंगी। ठीक है, अच्छा आइडिया है, गुड। और सर एक चीज, सैम्पलिंग के केस में भी आप जैसे क्वेश्चनर का 2 दिन ले लीजिए, और सैम्पलिंग में भी जैसे थोड़ा सा लोगों को डाउट है, वो चीज भी सर क्लियर नहीं होता। हम लोग बस एक assumption से ही चीजें चलती जा रही है, वैसे कर पा रहे हैं, बट एक माइंड में वो पिक्चर कभी क्लियर नहीं रही। 2-3 दिन उसके ले लीजिए, बेशक 5 days का ऐसा कुछ कर दीजिए सर, इमीडिएट इसी के बाद। जिससे क्या होगा, मोस्टली लोग यहाँ पे थीसिस पे वर्क कर रहे हैं या रिसर्च पेपर पे, तो हम सबको बेसिक चीज की दोबारा क्लैरिटी हो जाएगी सर। अभी तो बस आगे दौड़ वाला ही हाल है सर सबके लिए एक तरह से। ये ठीक है, अच्छा एमओस आइडिया। कराने से सर पहले करवा दो। सर ठीक आपने है, मोस्ट प्रॉमिस किया है सर, लेकिन पहले मैम चलो ये बस 2 दिन का वो मैं चाहिए एक पहले, काम ये उसके करूंगा ना बाद। कि दोनों एक चलिए देखते हैं, लेट्स सी। सर मोस्ट आपने प्रॉमिस किया, बहुत टाइम से आप तो मोस्ट बोल रहे हैं। मैम मैं तो पिछले साल से कह रही हूँ सबको, इस चीज के लिए, क्वेश्चनर के लिए इतनी रिक्वेस्ट पुटअप की हुई है मैम इस चीज के लिए, और बहुत लोगों की डिमांड है मैम। एक बार सर सर करवा दो सर, सब करा दो। कंबाइन कर लीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक छोटा सा पॉइंट और मुझे ये पूछना था। ये जो मॉडल्स हैं सर, जैसे अभी आपने भी डिस्प्ले करके दिखाया था, हमने सर्च करते हैं तो हम इसको अपने आप ही क्रिएट करते हैं सर? जैसे कुछ भी, जैसे मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग पे सोचते हैं, मेरे ये माइंड में कुछ चीज सिस्टमेटिक, चल रही ये एक्चुअली क्या है कि ये रिव्यू से आता है, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू के आउटकम। जब आप एसएलआर करते हो ना, तो उसके है। हाँ जी बाद हाँ जी। मॉडल फ्रेमवर्क भी बन जाता है। अच्छा, खुद ही हम बनाएंगे उसको, देख मतलब उसमें बिल्कुल से बिल्कुल पॉइंट्स बिल्कुल। लेके? या ओके। तो सर सर ये हम डालते स्वास्थ्य कहाँ एग्जैक्टली? लिटरेचर रिव्यू में डालेंगे, ये किस में डालते हैं सर ये एग्जैक्टली? क्योंकि ये मैंने देखा है आपका कि करिकुलम ये में डाला आपका है। रिसर्च मेथोलॉजी का पार्ट होता है, लेकिन ये जो अच्छा निकल के आता है ये लिटरेचर रिव्यू से निकल के आता है। अच्छा, डालेंगे उसमें जाके। ओके हाँ, डालेंगे आप इसको, क्या कहते हैं, रिसर्च मेथोलॉजी में, लेकिन ये बन के निकलेगा लिटरेचर रिव्यू से ही। ओके। सर एक चीज और पूछ रही थी, रिसर्च मेथोडोलॉजी में जैसे बहुत लोग बेसिक चीजें भी डाल देते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये सब कुछ भी डालना रहता है क्या? नहीं 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 ना? नहीं पेज नहीं, भरने के लिए लोग करते हैं जैसे ये। नहीं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, वो किताब थोड़ी लिखनी है कोई। हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, वही थीसिस में देखा था ना, तो मेरे माइंड में डाउट था ये क्यों लोगों की, मैंने सर खुद थीसिस देखी है, तो उसमें मैंने देखा कि ये क्या इन्होंने वही भर रखा है। मत देखा करो, रिसर्च हाँ पेपर पढ़ो, थीसिस तो बेकार होती है। हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है सर, मैं वेट करूंगी सर क्वेश्चनर वाली, कल ठीक परसों है, जब भी आप शुरू करोगे, पहले वही देखना है सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स। सर लास्ट क्वेश्चन सर, हम्म जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं और जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो चैप्टर 1 में डालते हैं हम लोग के आरएम वाले चैप्टर में? ये आपके रिसर्च क्वेश्चन तो चैप्टर 1 में भी आ सकते हैं और चैप्टर 3 में भी आ सकते हैं, दोनों जगह आ सकते हैं। तो दोनों जगह साइमल्टेनियसली भी हम यूज कर सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि, और वैसे भी आप थीसिस की बात ना भी करें, अगर आप रिसर्च पेपर भी उठाते हो तो रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव तो इंट्रोडक्शन में भी आता है और रिसर्च मेथोलॉजी में भी रिपीट होता है। तो लैंग्वेज सेम हो तो चलेगा कि वी हैव टू थोड़ा सा चेंज द डिफरेंस, लैंग्वेज? थोड़ा सा ओके, डिफरेंस होता है। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। या रुपिंदर, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर द वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन सर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। जैसे अभी प्रियंका मैम ने ना आपसे रिक्वेस्ट दी फॉर द क्वेश्चनियर ना, कि क्वेश्चनियर कैसे डेवलप करना है। सर एम आई ऑडिबल? तुम्हारी आवाज थोड़ी गूंज रही है, बाकी सब ठीक है। हेलो। हेलो सर, एम आई ऑडिबल सर? हाँ, अब बेटर है। हाँ सर, तो आपने एक बार ना सर इसी सेशन में ड्यूरिंग आपने 2-3 दिन पहले बोला था कि इंडिया में हमारी ये प्रॉब्लम है दैट द रिसर्चर्स दे आर नॉट टॉट हाउ टू कलेक्ट द डाटा। सर उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो प्लीज कि हमने डाटा कैसे कलेक्ट करना है? हम्म
है ना सर? आपने कहा था कि बस ये क्वेश्चनियर बना लेते हैं हम जैसे भी अवेलेबल होता है, बट ये कब कहीं भी नहीं सिखाया जाता कि डाटा कलेक्ट कैसे करना है सर। ये भी आप उसमें ऐड कर देना सर, तभी क्वेश्चनियर डेवलप होगा, इफ विल गेट टू नो हाउ टू कलेक्ट द डाटा ना। बिल्कुल सही बात है सर आपका पूरा सेशन का तैयार हो गया ना सर मटेरियल अब? सर इसमें एसएलआर भी डाल दो, क्योंकि लिटरेचर से तो वो फ्रेमवर्क बनेगा हम लोगों का सर। सही बात है। सर अब पूरा आप बोलते 2 दिन की वर्कशॉप होगी ना, अब आपका 4 से 5 दिन का मतलब पूरा सेशन हो गया ना सर अब आपका 1 वीक का? ये तो है सर हाँ। ये भी सर काइंडली ऐड कर काफी देना। सारे नए आइडिया आ गए हैं। हाँ जी सर, तो हाउ टू मतलब अब सीखते हैं सर, रोज सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भी नई नई चीजें आती है ना। दैट्स इट सर, मैंने यही कहना था। बाकी सर, बाकी थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके त्रिशा। गुड इवनिंग सर। सर मैं बोल रही थी कि क्वेश्चन तो सर आप करेंगे वो तो ठीक है सर, लेकिन उसके बाद से आइटम एनालिसिस और रिलायबिलिटी वैलिडिटी वो भी एक मतलब क्वेश्चन बड़ा, में आती है हाँ क्वेश्चन ये, जो भी क्वेश्चन टूल हो सर उसके। क्वेश्चन डेवलपमेंट का ही पार्ट है ये, आइटम एनालिसिस और हाँ सर कंटेंट वही बात वैलिडिटी। है कि कभी उस चीजों में ना क्लैरिटी नहीं है हम लोग एप्लीकेशन लेवल पे, कि हाँ पता है रिलायबिलिटी वैलिडिटी करनी है, स्पेशली कुछ कुछ पेपर्स में अच्छे से आइटम एनालिसिस रहता है, लेकिन उतना समझ नहीं आता कि कौन सा कैसे कंस्ट्रक्ट किया है। जो भी अच्छे अच्छे पेपर्स जो है, कोई टूल भी हम डेवलप करते हैं तो उसका मतलब स्टैंडर्डाइजेशन में भी बहुत दिक्कत होती है। तो थोड़ा वो क्लैरिटी रहता है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो स्टेप्स अच्छे से समझ आता है तो सर पीएचडी तो हेल्प होगा ही। उसके बाद भी अगर कभी कुछ टूल बनाया है जो भी करे तो उसके लिए थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी, अगर वैसे भी कुछ आप अरेंज करते हो प्लीज। ये असल में क्वेश्चन डिजाइनिंग के अंदर आ जाता है, ये जो आप बोल रहे हो वो उसके अंदर आ जाएगा। जी सर। सॉर्ट ऑफ पायलट स्टडी होगी ना देखा जाए तो, वैसे पायलट स्टडी से पहले का काम है ये। उससे पहले का काम है ये। Okay, so thank you very much for your participation. So we'll meet in another workshop. Thank you so much, sir. It was Thank you really so much, insightful sir. session. Thank you, sir. Thank you, sir. So thank you very much.